हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ये वाला आई लुक। एंड मैंने आईलिड पे कंसीलर अप्लाई कर लिया है। इनसाइड कॉस्मेटिक्स का 2x कवरेज कंसीलर इन शेड 01 सन बेज। एंड आईब्रोज फिल करने के लिए मैंने यूज किया है स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल आईलाइनर। दिस वन बहुत बारी देखा होगा आप लोगों ने, मैं ये बहुत यूज करती हूँ आईब्रो फिल करने के लिए। इसके अलावा आप आईब्रो पेंसिल यूज कर सकते हो या कोई ब्राउन कलर का आई शैडो भी यूज कर सकते हो। ओके, अभी सीधा जंप करते हैं आई मेकअप की तरफ। सबसे पहले मैं यूज करने वाली हूँ ये यू कैन बी की एब्स्ट्रैक्शन आई शैडो पैलेट एंड आई एम गोइंग टू डिप माई ब्रश इन दिस ब्लैक आई शैडो फर्स्ट ब्रश जो मैं यूज करने वाली हूँ वो है पैक कॉस्मेटिक्स का 126 ब्रश। इट्स अ स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश। आई नो ब्रशेज में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं है, मैं वही ब्रशेज यूज करूंगी जो मैं हमेशा करती हूँ। मेरा हाथ अभी ब्रशेज पे सेट है। ओके, एंड ब्लैक आई शैडो मैंने ले लिया है और सिंपली सिर्फ पीछे की तरफ हमने ब्लैक रखना है, इसको आगे नहीं लेके आएंगे। सिर्फ नो आउटर कॉर्नर पे हमने रखना है और सॉकेट सा मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, एक वी ड्रॉ करूंगी आउटर कॉर्नर पे, लाइक दिस, लाइक दिस। और इसको पीछे की तरफ ले जाएंगे थोड़ा सा और ब्लेंड करना स्टार्ट कर देंगे। Now I'm taking this big blending brush which is by Zoeva। ब्लैक आई शेडो लिया है थोड़ा सा और वही आउटर कॉर्नर पे रखूंगी और ब्लेंड कर देंगे अच्छे से। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। Now next here I'm going to use this blue eyeshadow, this one। मैट आई शेडो है, अभी शिमर नहीं लगाया है, पहले मैट लगाऊंगी। दिस वन, दिस। देखो कितनी अच्छी पैलेट है, एग्जैक्ट शेड निकल के आया है। सेम आई शेडो लिया है एंड अप्लाई कर दूंगी और इसी ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड भी कर देंगे। थोड़ा सा आगे से मैसी होता भी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, हमने पिगमेंट अप्लाई करना ही है इसके ऊपर। Next eyeshadow palette I'm going to use today is this March 16 color eyeshadow palette, and now let's do pigment. For pigment I'm going to take this blue pigment and yes, see, very beautiful eyeshadow। बजट में आती है, पॉकेट फ्रेंडली है, सुपर डुपर पिगमेंटेड है। You guys can see the pigment and एक एक मैट शेड बहुत पिगमेंटेड है। ओके, सो अभी इसी के ऊपर मैं सिंपली अप्लाई कर दूंगी इस eyeshadow को, like this। Look, blend blend blend। फिंगर की हेल्प से ही मैंने सब कुछ कर लिया है, यहाँ पे कोई ब्रश वगैरह कुछ नहीं यूज किया, सब कुछ फिंगर की हेल्प से ही हो गया। This and it's done। Look, next here I'm using TK2 Krylon Aqua Face Paint, this shade, and वाटर से एक्टिवेट हो जाते हैं easily। Yes, and here I have this eyeliner brush। First challenging part is done, and now we are going to do this wing eyeliner. For that I'm going to take this Inside Cosmetics matte eyeliner waterproof, this one। It comes with this type of long applicator and application बहुत अच्छी हो जाती है इस long applicator की help से। Okay, and normal wing liner लगाएंगे। I'm just going to stretch out my eyes and do this straight। सो नाउ वी आर डन विद दिस विंग आईलाइनर। अभी ब्लू आईलाइनर करते हैं फिर से इस ब्लैक आईलाइनर के ऊपर, एंड
बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट है। आई लाइनर्स ना हमेशा से मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहे हैं। बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद फिर आते हैं आई लाइनर्स करने अच्छे से। एंड अगेन मैंने इसके ऊपर स्प्रे कर लिया है वाटर और फिर से आई लाइनर ब्रश ले लिया है एंड आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ आई लाइनर। ओके, ओके सो ऑफ कैमरा मैंने इसको थोड़ी सी फिनिशिंग दे दी थी एंड वी आर डन विद द आई लुक। नाउ लेट्स डू मस्कैरा। सो थोड़ी बहुत जो फिनिशिंग थी वो मैंने ऑफ कैमरा दे दी है बिकॉज ऑन कैमरा हो नहीं पा रहा था। ओके कि मेरे को ना ऐसा मिरर को ऐसा बिल्कुल फेस के पास रख के, ऐसा आईज के पास रख के ना आई लाइनर लगाने की आदत है, ठीक है। सो यस, एंड नाउ just do mascara. For mascara I'm going to use this Sugar Pop Volumizing Mascara in shade Black 01. ऐसा नहीं है मेरे पास और मस्कैरा नहीं है, मेरे पास और भी है, लाइक आई हैव Insect Cosmetics, I have Mars and I have Nykaa, but I just love using this mascara. इसकी जो फिनिशिंग है ना वो और किसी की फिनिशिंग नहीं है। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट मस्कैरा इन माई मस्कैरा कलेक्शन एंड ये मस्कैरा लिटरली एक ही कोट में बहुत अच्छा वॉल्यूमाइज कर देता है आपकी आई लैशेस को, बहुत अच्छा कर्ल कर देता है आपकी आई लैशेस को। अब मैं आपको दिखाती हूँ। Oh wow. See. Look. एंड दिस इज ओनली वन कोट। अभी मैंने और ऊपर इसके कुछ भी नहीं ना आईलैश कर्लर किया है, कुछ भी नहीं किया है। ये एक कोट और बस that's it. इसके ऊपर अब मैं लैशेस अप्लाई कर लूंगी। ओके सो लैश करने से पहले लेट्स डू हाइलाइटर। So for highlighter, I'm going with this Inside Cosmetics highlighter in shade 04 Frosted Heart. It's a beautiful, beautiful silver highlighter. And I'm just going to highlight my brow bones like this. For my under eyes, I'm going to use these two kajals today by Mars Cosmetics, and one in shade Iceberg and second in shade Midnight Dreamer. Midnight Dreamer is a blue shade and Iceberg is a white kajal, white shade. First I'm using this one, which is a Midnight Dreamer. Look how pigmented this kajal is. Next I'm using this type of angular brush and I'm just going to blend this kajal. Next kajal I'm going to use today is this white kajal, Iceberg. I'm going to apply this kajal on my waterline. Look. So yes, this is it for today and look अच्छा लगा हो तो like कर देना, subscribe कर देना and thank you so much for watching. Bye bye.